Hello student, this is part 5th of chapter number 1st. In this video, we will try to discuss about the third characteristics of particle. This is particles of matter attract each other. To understand this characteristics, we can perform an activity. In this activity, we can play a game, and this game we can play in the field. We can make 4 groups and form a human chain as suggested. First group should hold each other from the back and lock arms like Idun Zimmi dancers, as you can see in this figure. As in this figure, the student hold each other from the back. First group have to do the same, and in the second group should hold hands to form a human chain. Second group में क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट एक दूसरे का हाथ टाइटली होल्ड कर सकते हैं. And in third group should form a chain by touching each other with only their fingertip. तीसरे ग्रुप में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? एक दूसरे के फिंगर टिप को टच कर सकते हैं. And the fourth group of students should run around and try to break 3 human chains. जो चेन हमने बनाई है उनको फोर्थ ग्रुप तोड़ने की कोशिश करेंगे. Into as many as small groups as possible. जितने छोटे ग्रुप में तोड़ सकते हैं वो उतने छोटे ग्रुप में इन 3 ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करेंगे. Which the question now, after your observation, which group was the easiest to break? किस ग्रुप को तोड़ना सबसे आसान होने वाला है? Of course, थर्ड ग्रुप को तोड़ना सबसे आसान होने वाला है, क्योंकि each student in this group are not binded with the larger force. They only touch their fingertips. That's why this is very easy to break this chain. And if you consider each student as a particle, if you consider each student as a particle of matter के अंदर भी पार्टिकल ऐसे ही एक दूसरे के साथ बाइंड रहते हैं, या वो बहुत टाइटली बाइंड अप हो सकते हैं या बहुत लूजली बाइंड हो सकते हैं. If we consider each student as a particle of matter, then which group of the particle held each other with the maximum force? Of course, the first group, the particle held each other with the maximum force. फर्स्ट ग्रुप में क्या है? जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं. We can perform another activity. We can take iron nail, a piece of chalk and a rubber band. We can try breaking them by hammering, cutting and stretching. In which of the above 3 substances do you think the particle of held together with the greater force? जिसको तोड़ना जितना ज़्यादा आसान होगा उसके पार्टिकल उतने लेस फोर्स से अट्रैक्ट होंगे या बाइंड अप हैं. तो आयरन नील को तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है. दैट्स वाई, बिकॉज द पार्टिकल ऑफ आयरन नील बाइंडेड विद द लार्जर फोर्स. और चॉक को हैमर करेंगे उसको तोड़ना आसान है, बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द चॉक इज बाइंडेड विद द लेसर फोर्स देन आयरन नील. Hope you are understanding. Third activity you can also perform to understand this. We can open the water tap and we can try breaking the stream of water with your finger. आप वाटर टैप ओपन कर सकते हैं और अपने फिंगर से उस स्ट्रीम को काटने की कोशिश कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी इजी टू कट वाटर स्ट्रीम. क्या आप ऐसे ही फिंगर से आयरन नेल को भी कट कर सकते हैं?
नहीं कर सकते क्योंकि वाटर स्ट्रीम के पार्टिकल बाइंडेड वेरी लेस फोर्स, but the iron particle binded very larger force. The above three activities, we what we know, we understood from these above activities that particle of matter have force acting between them. Particles of matter के बीच में एक फोर्स होता है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स. दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर. यही फोर्स होता है जो पूरे के पूरे पार्टिकल को एक साथ रखता है. द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स. अब ये फोर्स कितना मजबूत होगा, ये फोर्स कितना ज़्यादा होगा, it varies from one kind of matter to another. It can vary from in matter to matter. ये अलग अलग हो सकता है मैटर के काइंड के हिसाब से. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर, different states of matter, liquid, solid, gas. Bose-Einstein you will study in your next video, the state of matter.